So namaskar all of you. So civil services by optional law subject our own classes रे October month रे start होची. So ता विषय रे details मु आपन को देबी. तो एई जो बैच टा अछि particularly civil services by both UPSC और OPSC को cater करूची. ऑप्शनल्स भितर आमे बहुत गुडे ऑप्शनल्स दोछु लॉ ता भितर गोटे तो एटा बेसिकली मु लॉ ऑप्शनल पई ओके एटा मु हमर जो प्रेजेंटेशन टा दैट इज रिलेटेड टू लॉ ऑप्शनल तो लॉ ऑप्शनल रे हमर जो माने लॉ करिचंती से माने भी नहीं परिबे प्लस जो माने लॉ रे इंटरेस्टेड अछंती से माने भी एटा जॉइन करि परिबे आर बड़ एडवांटेज कौन रोची लॉ ऑप्शनल रो कि एटा गोटे आपण कहि परिबे जेनेरिक पेपर माने कोन ना जो माने इंटरेस्टेड अछंती नॉन लॉ बैकग्राउंड रो अछंती तथापि इंटरेस्टेड अछंती ताहेले भी से माने ए पेपर टा चूज करि परिबे तो एटा गोटे तर चूज करी कि सक्सेसफुल भी हे परिबे आगुरु भी एग्जांपल्स रही छी आपै ओके सो तारी ऊपर मु बेसिकली अपन संग कथा हेबी हमर जो लॉ ऑप्शनल रोची प्रथमे टिके त सिलेबस टा मु एनालाइज करबी कि कौन से एक्सक्यूज मी से तरह रोची एंड तापरे कोर्स जोटा हमर स्टार्ट हबो अक्टोबर 20 तारिख रु ता विषय मु डिटेल्स अपन कहबी तनो प्रथमे टिके सिलेबस टा आगे देखि दबा लॉ रो सिलेबस रे हमर कोन अछि तो जदि हम देखिबा So paper 1 section A तो एटा आपन को लागु थिबो बहुत ही गोटे बड़ सिलेबस भलिया किंतु एक्चुअली पिन पॉइंटेड मटेरियल जोटा आपन को प्रोवाइड होबो ऐप थ्रू रु सेथरे आपन ओके बहुत जल्दी कोर्स टा कंप्लीट करि परिबे हमर टारगेट रोची 3 to 4 months तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया preamble and nature of Indian constitution तो एटा जीएस संगे रे भी बहुत आपन को हेल्प करिवो काहे कि ना जस्ट लाइक पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन रे जेंति कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट टा पूरा डिटेल से रहउची एठी कॉन्स्टिट्यूशन रहउची प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ टा भी रहउची माने आपन आउ टिके डिटेल्स रेटा पढी preamble and nature of Indian constitution general ideas on fundamental rights right to equality, right to freedom of speech and expression, right to life and personal liberty, life to constitutional remedies ता ऊपर बेसी फोकस थाए ओके जो छटा फंडामेंटल राइट्स आपनकर अछि ता भितरु एई चारटा ऊपर आपनकर बेसी फोकस रहउची सिलेबस हिसाब रे ता ऊपर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट and relation with council of ministers governors and his power appointment and transfer of judges of supreme court and high court powers and jurisdiction UPSC state public service commissions thorough powers and functions distribution of legislative powers between union and states administrative relation between union and states emergency provisions civil servants constitutional safeguards parliamentary privileges amendment to the constitution principles of natural justice and judicial review of administrative actions okay eta constitutional law part ta kala that is section A of paper 1 constitutional law eta आपण कहि परिबे त माने आपण इन डेप्थ पढिबे पॉलिटी रो पार्ट ता जोटा जीएस पे भी आपण को बहुत दरकार हबो सेक्शन बी पेपर 1 रो आसी एटा इंटरनेशनल लॉ दोची एगुडा आपण को बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द ऑप्शनल एटा आपणकर जेतले कंपैरेटिव आंसर्स आपण लेखु जति एसे करी का हे गला ओके किबा आउरी भी बहुत गुडे जीएस पेपर्स रे एथिक्स करी का रे भी आपण को हेल्प करिवो नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ individuals nationality statelessness human rights and procedures available for their enforcement state recognition and state succession treaties formation application and termination United Nations, its principal organs, powers and functions, General Assembly and Security Council. Concept of Human Rights, UDHR 1948, International Covenant on Civil and Political Rights 1966,
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966, International Commission on Human Rights, New International Economic Order and Monetary Law. Okay, जोथरे WTO TRIPS, GATT, IMF, World Bank भी रोच. तो एटा आपनकर बहुत गुडे जिंस आपण सोशल इश्यूज भी पढुचंती आगुर जोटा ऑर्गेनाइजेशंस थिला जोटा कि एबे जीएस रो डिफरेंट एरिया ताको डिवाइड करा ही जायछि इकोनॉमी रो भी किछि पार्ट्स आपण ओके जो वर्ल्ड बैंक ट्रिप्स करिका सेगुडा आपण सेथरे भी जीएस रे आपण को हेल्प करिवो. नेक्स्ट हला पेपर 2 दैट इज लॉ ऑफ क्राइम. तो एठी आपण फंडामेंटल किबा पूरा कोर लॉ पेपर्स को आपण आसी गले एठी गोटे जिंस मन रखिबे जो माने ओजेएस पई प्रिपेयर करचंती किबा जुडिशियल सर्विस में प्रिपेयर करचंती प्रोसीजरल लॉ हमरो ओके टोटली सिलेबस रे नाही. सो प्रोसीजरल लॉ टा ओके सिविल सर्विस सिलेबस रे नथाय. तो लॉ ऑफ क्राइम्स रे आसिला जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी मेंस रिया एक्टस रियस मेंस रिया इन स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस. तो एटा बोथ आपण को आईपीसी सीआरपीसी आउ जो न्यू लॉस जोड़ा ता संगे इक्वेट करिया पे पड़िबो. ओके बीएनएस सहित स्टेजेस ऑफ क्राइम प्रिपरेशन एंड क्रिमिनल अटेम्प्ट्स general exceptions joint and constructive liability abatement criminal conspiracy offenses against the state offenses against public tranquility offenses against human body offenses against property offenses against women defamation prevention of corruption act 1988. okay तापरे एटा सेक्शन ए रे दीटा पार्ट अछि गोटे क्राइम आ गोटे टॉर्ट. सो क्राइम्स एंड टॉर्ट्स जोटा में कहू. ओके तापरे एठी गोटे जिंस देखिबे ये पर्टिकुलरली कहूनी कि एटा आईपीसी. ओके ता माने आपन आईपीसी टा भी जानिबार अछि आ बीएनएस टा भी जानिबार अछि. लॉ ऑफ टॉर्ट नेचर एंड डेफिनेशन लायबिलिटी बेस्ड अपॉन फॉल्ट एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी vicarious liability state general defenses joint tortfeasors negligence defamation nuisance conspiracy false imprisonment malicious prosecution consumer protection act 1986. तो एटा गोटा क्राइम्स एंड टॉर्ट. तापरे सेक्शन बी रे आसीला लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मर्केंटाइल लॉ. सो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फैक्टर्स vitiating consent void voidable illegal and unenforceable agreements performance and discharge of contracts quasi contracts consequence of breach of contract contract of agency sale of goods and hire purchase formation and dissolution of partnership negotiable instrument act 1981 negotiable instrument meaning promissory note bill of exchange check crossing of checks and dishonor of checks. तेणु ए सबू आपणकर रहिला सेक्शन बी रे. ओके जेटा आपणकर कमर्शियल लॉ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मर्केंटाइल लॉ. सो दिस इज वी कैन से बेसिकली द टोटल सिलेबस. तेणु से हिसाब रे हमर बोथ ऑनलाइन और क्लासरूम रो ओके बैचेस रहउची. क्लासरूम में जो माने जॉइन करचंती तांकर एडवांटेज कोन रहउची ना तांकू रीडिंग रूम अवेलेबिलिटी रहउची आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहउची स्टडी मटेरियल्स रहउची. अबसे जो 16 प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स एटा जोरा इंटीग्रेटेड बैच पे ओके एथरे हमर जो ऑप्शनल्स पई आपनकर जो दिया हो मटेरियल ता सेटा ऐप बेस्ड ओके प्रिंटेड नो सेटा. सो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग 24/7 ऐप और व्हाट्सएप सपोर्ट क्लास नोट्स. ओके तो एटा क्लासरूम और ऑनलाइन बैचेस दी जन को ऐप थ्रू रे दिया हो. तेणु आपण निजे सेठू नोट्स बनै परिबे कि निजे ताकू यूज कर परिबे किंतु सेटा ना आपण ताकू शेयर करि परिबे ना प्रिंट करि परिबे. ओके ऐप फॉर्मेट रे सेटा थाए. तापर तारो टेस्ट करि कर होची. ओके आउ यदि डिटेल्स देखिबा ऐप रो एक्सेस 30 वर्ष पे रहउची. त माने एगुडा टिल सक्सेस ऑप्शनल बैच उडा एमति नो कि मु धरंतु 1 ईयर पे ही मोर एक्सेस रहिबो कि सेमति नै एटा 30 इयर्स एक्सेस रहउची. ओके ता माने कोन आपण एबे तो एज भी बहुत बढ़ी गला स्पेशली स्टेट सिविल सर्विस रो ओपीएससी रो. तेणु वंस आपण जॉइन करले पूरा आपणकर जो पर्यंत एग्जाम दउचंती वैलिडिटी आपणकर आराम रे कवर हबो. बट टेक्निकली स्पीकिंग ऐप टा 30 इयर्स रे वैलिड रहउची. ओके सो study material through the app access till success
live and recorded classes till success, test series, answer writing till success, interview support, okay सेटा भी एटा रहउची, ओके आउ फीस आपनकर जो माने क्लासरूम रे जॉइन करिवे 12000 जति आपण इंस्टॉलमेंट्स रे देबे, ओके सेटा थ्रू ऐप आपन दबार अछि, आउ 10000 जति आपण वन टाइम दउछ, ओके ऑनलाइन जति आपण न पई चाहछन ताले आरो कोर्स फी 5000 रुपीस रहउची वन टाइम, ठीक अछि। इंक्लूजन्स रहउची ऐप बेस्ड स्टडी मटेरियल्स, चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर्स सेटा भी ऐप फॉर्म रे मिलिबो, तार टेस्ट सीरीज रे 16 टा टेस्ट रहउची, ओके पूरा सिलेबस सरला परे नहले चैप्टर सरिले आपनकर चैप्टर वाइज टेस्ट रहइबो जोटा कि कोयला चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस एंड मॉडल आंसर्स, ओके तापरे सॉल्व आपनकर पीवाईक्यूज रहउची बोथ यूपीएससी ओपीएससी रो 2015 रो एंड इंटरव्यू सपोर्ट भी आपनकर एथरे इंक्लूडेड रहउची। तो मेंस पर आपण इंटरव्यू केटे सिलेक्ट हेबे ताले से इंटरव्यू पोस्ट जोडा हमर थाए सेटा आपनकर इंक्लूडेड रहइबो एथरे। ऑफलाइन जो माने करिया पे चाहउचंती एटा खंडगिरी रे होउची, भुवनेश्वर खंडगिरी सेंटर रे, आउ तार जो बैच टा स्टार्ट होउची एटा अक्टोबर 20 रु स्टार्ट होउची, ओके अक्टोबर 20 रु ए बैच टा स्टार्ट होउची, ओके एंड टाइमिंग ऑफ द बैच एटा एक्चुअली आफ्टरनून बैच रहउची 12 रु 2टा, okay so this is basically 12 to 2 p.m. okay our recorded videos गुडा आपको 24 hours पर सेटा मिल जाउछु। सो जो माने लॉ ऑप्शनल कंसीडर करूचंती, स्पेशली जो माने बोथ सिविल सर्विस और जुडिशियल सर्विस एक संगे प्रिपेयर करूचंती, तेनु लॉ ऑप्शनल तांका पई गोटे बहुत वायबल ऑप्शन जोथरे कि गोटे जिंस रही आपण गोटे ऑप्शनल रही आपण बेनिफिटेड हे जिवे जुडिशियल सर्विस से भी और सिविल सर्विस से भी। एथिक कथा लाइक आई टोल्ड यू जुडिशियल सर्विस रो बहुत वास्ट सिलेबस और भी बहुत जिंस अछि, एथरे बहुत लिमिटेड जिंस दिया हिच सिविल सर्विस रो लॉ ऑप्शनल सिलेबस, ओके सो जदि आपनकर आ किछ डाउट अछि ताले जो नंबर टा स्क्रॉल रे दिया होची 7684054656 सेतरे आपण आपनकर जा डाउट्स अछि सेगुडा आपण पचारि परिबे, ओके सो ए बैच टा स्टार्ट होची 20th अक्टोबर मंडे दिन 12 रु, इधर ऑनलाइन आपण जॉइन करि परिबे कि जदि क्लासरूम में चाहउछंती भी जॉइन कर परिबे। ठीक सेमते एटा लॉ ऑप्शनल स्टार्ट होची, आगु को हमें जो 16 टा ऑप्शनल दोछु, so subject by subject it will start, okay best wishes for your preparation, namaskar।